So, hello everyone. How are you all? Hello guys. So, this is our third session of this this is our actually third part of this geography session. So, now I am going to share my screen. And you need to actually tell that is it visible or not. Hello Garima. Hi. So now just quickly tell that is my screen visible or not? Is my screen visible or not? Kindly tell. Yes, please tell. I'm waiting. Yes, okay, thank you. Thank you, Nevafitai. Thank you, Garima. Okay, so actually we have discussed this all. I think I must say that you all have practiced. So basically, I've prepared firstly some quiz for you. Okay, we have learned the types of rocks too. Okay, first I will show you the questions. Okay, and you need to start answering. Okay, and I just want to tell you that we have studied also this, that when coal reacts with air and it leads to electricity, how, and with the process of combustion, right? So basically, let me show you the quiz, and the quiz time is here. Okay, so the first question, the very first question is right here, that how many types of rocks are there? You need to start answering and you need to name them, that how many types of rocks are there. Okay, you need to start answering. What are the what are actually their names? Okay, so Akshay Bhatt has answered. It is 3. Okay, very good. Very good, Garima. Very good. And it name the names of them. Yes, Garima, you are absolutely correct. Akshabad, you are also correct. Very good. So now we have come upon second question, which is in which important chemical process coal reacts with air. Abhinav, I tell you that in which important process coal reacts with air and it leads to fire. I have told you that right now we just discussed that in which process coal reacts with air and it leads to heat. It actually gets converted into the boiler. Okay, it helps in boiling. So with the help of which process? Come on guys, start answering. Okay, the answer is very easy. अभी we discuss. See, हमने पढ़ा था that which chemical process. Garima, you are so intelligent. It is combustion. Very good. Very good. It is very good. And the third and the last question. What is present inside the earth surface? It is just very easy. It is just a third class question and you should answer this. Yes, Nafrida, you are correct. Absolutely correct. It is very easy. That what is present inside the earth? Magma. Yeah, magma. Good job. So the correct answer is magma. Okay, it is magma. Yes, Neil Jaggi, you are also correct. Yeah, it is magma. Now we come up to the next topic, the topic of today. And yeah, today we are going to know many other things about electroplating, soldering, a lot of. So watch till the end. Don't miss any part. Okay, any part. Now we are going to know types of mining. So there are 4 types of mining. Mining is actually when we take out the buried ores. As you know that ores actually occur inside the earth, right? So mining is a process in which we actually extract the minerals which are present inside the earth's surface. Okay, this is what mining means. Okay, and the method used for mining depends upon the depth. Okay, it means
that if it is actually not very depth, okay, its depth is actually very less, means that it is actually present near the earth's surface, then it is actually quarrying. Okay, there are four types of mining. The first is quarrying. It means that when the minings are present, when the mining is done at the earth's surface, okay, near the earth's surface, the ores are actually present somewhere near the earth's surface. Okay, it means that at our surface only. We don't have to dug very depth. Okay, very depth. Okay, so this is what it is. Now the second is open pit or open cast. What it is, that when ores occur at shallow depth. Okay, it means that the depthness is little shallow right here. Okay, that one was the when ores occur near, very near. Okay, depthness is actually very less, and here the depthness is actually shallow. Okay, and they can be extracted by removing the surface layer. So आपको याद रखना है कि जहाँ भी surface layer की बात हुई, means ये जो surface layer है, you can see that यहाँ पे can you see that यहाँ पे surface layer, यानी कि जो हमारा earth का surface है, उसकी first layer को dug out करा गया, and then they used to take out the ores. Okay, this process is called open pit or open cast, in which हम लोग surface area को हटाते हैं, means this is surface area. Okay, yeah, so आप देख सकते हो, this is actually the surface area, and जब हम इसे dug out करते हैं, and जब हम लोग इस जो हमारी surface area जहाँ पे हम रहते हैं, okay, we used to dug out that particular portion, and then we used to extract the ores. Okay, this process is called open pit or open cast mining. Okay, got it? Yeah. So the third is shaft mining. So अभी आपको, I think that you have got that what is quarrying, what is open pit or open cast. So quarrying, अभी हम revise करते हैं. Quarrying is when it is actually the mining is done near the earth's surface. The ores are found near the earth's surface, right? Yes or no? Yeah. And open pit or open cast is when it occur at shallow depth, a little depth. Okay. Here the depthness is there, and the surface layer is actually extracted. The surface layer is actually removed, and the ores are extracted. Okay, and this process is called open pit or open cast mining. The third is shaft mining. What is shaft mining? When a shaft is dug, shaft is a hole, or you can say surang. Okay, I think you might have seen those surang in some movies, okay, some adventurous movies. आपने देखा होगा सुरंग. You know that वो सुरंग में से जाते हैं, when Indian फौजी सुरंग में से जाते हैं, वो like छुपके okay, like they वो सुरंग में से जाते हैं. Yes or no? You might have seen this, right? So 1 second, let me just hide the title screen. Okay, yeah, now I'm going to share it again. Yeah, so yes, yeah, so basically let me just share. Yeah, now it is visible. Yeah, okay, so basically a shaft, or can say a deep hole or a surang. Okay, surang I think you might have seen. Okay, वो dug होती है, वो actually वो सुरंग बनाई जाती है, जिससे हम लोग ओर्स को एक्चुअली जाके देख सकते हैं. See, this picture is actually looking very scary. आप देख सकते हैं, there is actually, it is looking like something, a big den, a big something like that. Okay, yeah, that is what a shaft is. And when a shaft is dug, then it is shaft mining. As easy as you think. Okay, ये बहुत easy है आपको. Means अभी हमने देखा था कि क्वायरिंग होती है जब बहुत नियर हमारे अर्थ सरफेस के बिल्कुल पास ओर्स अकर करते हैं. ओके, एंड दिस ओपन पिट है जब वो सरफेस लेयर को हमें रिमूव करना पड़ता है, यानी कि वो हल्का सा और नीचे होते हैं. या राइट? सो ओपन पिट में वो जो ओर्स होते हैं वो एक्चुअली सरफेस लेयर के नीचे होते हैं. दैट इज हम लोगों को सरफेस लेयर रिमूव करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट आउट ओर्स. राइट? या. And the shaft mining. What is the shaft mining? जिसमें हम लोगों को shaft dig out करना पड़ता है. यानी कि ये माइनिंग अभी की तीनों माइनिंग में सबसे ज्यादा डेप्थ पे. Okay, it is actually the most depthful mine till now. थर्ड में से सबसे ज्यादा डेप्थ पे ये shaft mining है.
एक्चुअली शाफ्ट को डग आउट करते हैं, यानी कि डीप होल बनाते हैं जिससे वो लोग मिनरल्स एंड उसको निकाल सकते हैं। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट माइनिंग इज ड्रिलिंग। इसमें एक्चुअली जो वेल्स होते हैं उनको अंदर तक डग करा जाता है एंड मिनरल ऑयल, नेचुरल ऑयल को निकाला जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। ओके, यानी कि अभी तक हम लोगों ने जितनी भी माइनिंग करी है दे आर एक्चुअली अरेंज्ड इन एन ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में वो अरेंज्ड है कि कौन सा सबसे ज्यादा डग है। सबसे पहले वो कम डग है, यानी कि कम डेप्थ पे है। ओके, द फर्स्ट वन इज एक्चुअली वेयर द डेप्थनेस इज वेरी लो। ओके, सेकंड में डेप्थनेस थोड़ी ज्यादा है, इट इज एक्चुअली लिटिल शैलो एंड इसमें सरफेस एरिया रिमूव हो जाती है। एंड द थर्ड इज जिसमें थोड़ा और ज्यादा डेप्थनेस है एंड इसमें शार्प डग होती है। Fourth and the last is the most depthful. Okay, and इसमें wells dug out होते हैं. Okay, to extract the mineral oils and even ores. Okay, so this is about what are the types of mining, right? So now let's come up to the metallic minerals. Now we are going to learn about different metallic minerals. Some metallic minerals, not different actually, only some metallic minerals. And we are going to learn more about them in detail. In great detail we are going to learn. So first is iron ore. सबसे पहले हम iron ore के बारे में करेंगे. Iron is the backbone of modern civilization. It means it is actually like a supporter. Okay, I think you might have studied about Iron Age in history. Yeah, I think you have read about it. Yes or no? आपने पढ़ी Iron Age के बारे में, in which the people used to work out with iron. Okay, they actually used to form tools. They actually used to make tools and utensils, and even they used actually those swords, the talwar and all, right? So they all were of iron in the Iron Age, right? In the Vedic age also iron was used at the most, right? It is a cheap and durable metal and can be mixed with other metal to form alloys. Alloys are actually the metals which are formed when two metals are mixed. Means suppose this is one metal and this is the another metal and they together form the alloy. Okay, so alloy is actually a combination of two or more different metals, right? Got it? Yeah. So this is what it is. It is okay. It is used to manufacture tool, utensils, etc. Okay. So basically मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है. मैंने जैसे कि आपको बताया यूटेंसिल यानी कि बर्तन एंड इवन इन दोस टूल्स, दोस स्वर्ड्स है ना, उनमें उनको बनाने में भी वो हेल्प करता था. इट इज मिक्स विद कॉपर एंड निकल टू मेक स्टेनलेस स्टील. तो यानी कि आयरन जो है वो कॉपर और निकल यानी कि जो Fe है, आपको पता है आयरन का केमिकल सिंबल Fe है ना. आयरन का केमिकल सिंबल Fe है ना. आयरन is mixed with copper or cuprum and also nickel to make stainless steel. Okay, yeah, there are 4 varieties of iron: hematite, magnetite, limonite and siderite. अभी मैं आपको एक ऐसा फंडा बताऊंगी ना जिसमें मैं आपको बड़ी ही इजीली ये सारे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट एंड साइडराइट अच्छे से याद कराऊंगी एंड इवन मैं आपको इनको डिटेल्स में बताऊंगी. ओके, थैंक्स गरिमा. या सो मैं आपको इनको डिटेल में बताने वाली हूँ. सो अभी आपको ध्यान से सुनना है. सो हम लोग सबसे पहली वैरायटी आयरन ओर की है हेमेटाइट. हेमेटाइट एक रेडिश ब्लैक मिनरल है कंसिस्टिंग ऑफ फेरिक ऑक्साइड. यानी कि आयरन है और क्या है, आयरन है एक्चुअली 3. ओके, उसके एक्चुअली कितनी अमाउंट में आयरन प्रेजेंट है, 3 अमाउंट एक्चुअली 3 में. ओके, एंड दिस ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन आयरन जैसे कार्बन ऑक्साइड होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, वैसे कार्बन ऑक्साइड भी होता है. ओके,
सो दिस कार्बन ऑक्साइड होता है ना, जैसे फेरिक ऑक्साइड, इसमें आयरन यानी कि आयरन इन अमाउंट 3 is mixed with oxygen in amount 3. Okay, so this is ferric oxide. And आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, because when you will attend those Olympiads related to the geography, this chapter, they are actually very confusing and they will ask you about this hematite, magnetite, limonite and citrate. आपको सबसे अच्छे से करना है कि ये है, सबसे पहले है hematite, then magnetite, then limonite and then siderite. Okay, HMLS आपको ऐसे याद करना है, हम, ओके, V यानी कि हम, और फिर आपको याद करना है LS. ओके, हम LS. ओके, यू नीड टू रिमेम्बर इट, क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर वे होता है, बिकॉज इनकी कुछ सिमिलरिटीज होती है एंड इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जिसको आपको इनको ऑर्डर में पढ़ना जरूरी है, बिकॉज HMLS आपको ये अच्छे से याद करना है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट एंड साइड्राइट. ओके, सो अगर आप इसे याद करोगे देन यू विल रॉक इन ओलंपियाड्स. थैंक यू अनुष्का सो मच. ओके, सो दिस इज HMLS. ओके, अभी हम लोग पढ़ते हैं हेमेटाइट के बारे में. सो इट इज एन इंपॉर्टेंट ओर ऑफ आयरन एंड इट इज रेडिश ब्लैक. सो सी कितना क्रिस्टलाइन इन शेप है, सी आपको दिख रहा है कितना क्रिस्टलाइन इन शेप है, या, एंड इट इज, आपको इसका ये भी याद रखना है कि फेरिक ऑक्साइड यानी कि आयरन इन अमाउंट 3 एंड ऑक्सीजन इन अमाउंट 3. ओके, आपको अच्छे से याद रखना है. ओके, दिस नीड्स टू बी रिमेम्बर्ड. क्रिस्टलाइन मींस क्रिस्टल इन शेप. यू नो व्हाट इज क्रिस्टल? आपने देखा है जो हमारा जो सॉल्ट होता है दैट इज आल्सो क्रिस्टलाइन इन शेप. एंड इवन Alina, ferric oxide is, as you know that what do you know that this ferrous, FERROUS, this ferrous is actually iron, right? ये Greek word है iron का, right? So this ferric is actually, जब iron को हम लोग 3 amount में लेंगे, okay, in quantity 3, so this actually forms फेरिक ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड. ऑक्साइड आपने पढ़ा है ना, आई थिंक यू हैव स्टडीड इन केमिस्ट्री अबाउट ऑक्साइड. ऑक्साइड क्या होता है, जिससे हम लोग होते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस सी. दिस इज एक्चुअली, सपोज लेट मी टेल यू, दिस इज कार्बन, ओके, एंड दिस इज ऑक्साइड इन अमाउंट 3. ओके, दिस इज व्हाट, हाय सिमरन, so this is what carbon dioxide is. Okay, and same goes with the ferric oxide. बस इसमें इतना अंतर होता है कि इसमें फेरिक की, फेरस यानी इसमें कार्बन की जगह आयरन होता है, तो इट इज फेरिक ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड. यू कैन से इट इवन आयरन ऑक्साइड. अगर आपको याद करना है तो आप इसे आयरन ऑक्साइड ले लीजिए. ओके, सिमरन, ऑक्साइड इज एक्चुअली O3 not O2. इट इज, या आप उसको एक, आप जैसे है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का आपने वो पढ़ा होगा, इट इज एक्चुअली CO2, राइट. लेकिन जो फेरिक ऑक्साइड है, इसमें जो जिसमें फेरस की तो अमाउंट आपको पता ही है, फेरस की अमाउंट क्या है इसमें, I3, एंड ऑक्साइड की अमाउंट, इट मे बी समटाइम इट इज एक्चुअली, थैंक यू, ओके, इट इज वेरी ओके, इट्स ओके, या. सो ऑक्साइड की इसमें 3 से 2 के बीच में रहती है. अब यू विल आस्क व्हाई सो, बिकॉज़ ना जो नाइट्रिक होता है ना, जैसे फेरिक, वैसे एक होता है ऐसे ऑक्साइड. सो बेसिकली आप इसको इस तरीके से रखिए कि फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, आयरन ऑक्साइड. ओके, आपको बस ये याद रखना है. ओके, आयरन ऑक्साइड. ओके, अभी हम लोग अभी आपको, आई थिंक आपको हेमेटाइट अच्छे से क्लियर हो गया है. यार सिमरन, यू आर राइट. डाइऑक्साइड इज 2 एंड ट्राइऑक्साइड इज 3. या मोनोऑक्साइड इज 1. या actually that is the simple oxygen, then monoxide is, yeah. So it is an important. अभी आपको मैग्नेटाइट अच्छे, हेमेटाइट अच्छे से हो गया होगा. Now let's move to the magnetite. So magnetite is a rock mineral and one of the main iron of the chemical formula. Ferric,
इसमें ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो 4 है। ओके, यानी कि जो इसमें हेमेटाइटिस क्लियर। ओके अलीना, so if any doubt in hematite na, so you can actually ask me now. Okay, yeah, so ये जो मैग्नेटाइट होती है, मैग्नेटाइट इज अ रॉक मिनरल एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल विद अ केमिकल फॉर्मूला फेरिक। इसमें भी Fe का मैंने आपको बताया ना, व्हाट इज फेरिक, फेरिक होती है Fe3। ओके, फेरिक, ये तो फेरिक हो गया या Fe3, एंड दिस वन O4 इज कॉल्ड pub। ओके, इट इज कॉल्ड pubchem। व्हाट इज O4 कॉल्ड? इट इज कॉल्ड pubchem। इट इज कॉल्ड pubchem। और आप इसे टेट्रा ऑक्सीजन भी कहते हैं, टेट्रा ऑक्सीजन या ओजोन। ओजोन इज एक्चुअली ऑफ 3, ओजोन इज एक्चुअली 3, राइट? तो आप इसे टेट्रा ऑक्सीजन कह सकते हैं। ओके, गॉट इट? सो बेस फेरिक इज F3 या सिमिलर फेरिक इज एक्चुअली Fe3 and this O4 is pubchem. Okay, it is PUBCHEM. This is pubchem. Similar C. This one is as you told right now that O3 is actually, you may say O3 as trioxide, but in this O4 we say it tetraoxide, or tetra is actually 3 plus 1. Okay, tetra is actually 3 plus 1. You may say tetraoxide or even pubchem. Okay, you need to remember this because it will help you. It can come in any exam in any grade. Okay, because this is actually what you're studying right now is actually of 7th or 8th grade, or even 8th or 9th only, because it is not even 7th grade also. Okay, so O4, this O4 you can call it pubchem and even tetraoxide. So abhi everyone needs to repeat that tetraoxide is equals to, this tetraoxide is actually equals to O4, right? And pubchem is same as tetraoxide. Okay, so abhi aapko aaj humne तो ये this O3 और oxide is actually, see, ऑक्साइड को आप 2 लेंगे एंड जो ओजोन, कभी कभार यू नो दैट ये जो फेरिक ऑक्साइड है ना, इसमें कभी कभार फेरिक और इसमें कभी कभार ओजोन भी मिक्स होता है, एंड दैट ओजोन इज एक्चुअली हैविंग द फॉर्मूला 3। थैंक यू सिमरन। या सो यानी कि सो व्हाट डज इट मीन दैट फेरिक इज एक्चुअली Fe3। ओके, फेरिक इज Fe3 एंड व्हाट इज this oxide is actually O2, and कभी कभार you also need to remember कि कभी कभार इसमें ओजोन भी मिक्स होके आता है, and at that time this is O3. So ferric plus sometimes ozone and sometimes oxide. So आपको ये अच्छे से याद करना है कि कभी कभार फेरिक यानी कि आयरन के साथ कभी कभार O2 भी आ सकता है, एंड कभी कभार ओजोन यानी कि O3 भी आ सकता है। ओके, एंड मैग्नेटाइट में हमने क्या पढ़ा कि इसमें होता है फेरिक O4 यानी कि आयरन जो कि 3 में, एंड O4 यानी कि पबकेम और टेट्रा ऑक्साइड। थैंक यू अलीना, थैंक यू सिमरन। यानी कि टेट्रा ऑक्साइड और पबकेम आपको अच्छे से याद करना है कि व्हाट इज पबकेम। पबकेम इज O4, पबकेम O4 होता है, राइट? पबकेम इज O4 and this tetraoxide, this is also O4. तो आपको I think that आपको ये सब समझ आ गया होगा। If yes, then those smiley, please send those smiley figures. अगर आपको समझ आ गया तो आप स्माइली फिगर सेंड करो कि आपको ये आया या नहीं आया। पबकेम एंड टेट्राऑक्साइड, पबकेम एंड टेट्राऑक्साइड आपको याद रखना है कि this O4 is called पबकेम और टेट्राऑक्साइड।
Okay, Simran. Okay, Alina. Okay, never futile. Thank you so much. Amit, sorry, Garima. Thank you. Yeah. Now we come up to limonite. अब हम लोग थर्ड जो हमारा आया है वो लाइमनाइट है. सो मैग्नेटाइट के बाद हम आते हैं अब लाइमनाइट में, जो वन ऑफ द मेजर आयरन मिनरल्स है. इसका फॉर्मूला, इसका एक्चुअली फॉर्मूला है FeO and OH in brackets and even H2O. तो आप इसमें देखेंगे, यहाँ पे इसमें वाटर का एक्चुअली फॉर्मूला भी लगा है H2O, राइट. इसमें वाटर का फॉर्मूला भी लगा है एंड इसमें फेरिक ऑक्सीजन यानी फेरिक एंड ऑक्सीजन यानी कि फेरिक ऑक्सीजन का भी फॉर्मूला लगा हुआ है. ओके एंड यहाँ पे ब्रैकेट में जो OH दिया हुआ है, दिस OH टुगेदर विद द वाटर फॉर्मूला इज एक्चुअली कॉल्ड द हाइड्रेटेड. ओके सो FeH2O यानी, हाँ वेरी गुड सिमरन, Fe is actually iron, right, and this H2O is actually the formula of water, hydrogen and amount 2 and oxygen, yeah. And then we also have ferric O. We have FeO, means what does it means? We have that what we have is that ferric oxygen यानी कि iron is actually mixed with oxygen here in one quantity, which means that, let me tell you, it's been very untidy. Yeah, so FeO and H2O. So अभी आपको ये देखना है कि FeO is actually the ferric आप है ना, and yeah, do you know that ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था हेमेटाइट में फेरिक ऑक्साइड, it can be also O1. ये O1 भी हो सकता है, because you know sometimes we call oxide as O1 also. Do you know that कि कभी कभार हम लोग इस फेरिक ऑक्साइड को हम लोग O1, O2 and O3 is actually, it is a range between O1 and O3. Okay, O1, O2 and O3 it can be. Okay, that is what about hematite. मैग्नेटाइट का फेरिक एंड पबकेम, एंड यहाँ पे लाइमेनाइट में आया था, हम लोगों को पता है कि ये फेरिक प्लस ऑक्सीजन एंड ऑल्सो दिस H2O plus OH, right? So this H2O and OH together are read as hydrated. Yes, Simran, they are actually acting as ferric water. Okay, when this is actually deposited, plus ferric water is also there, but you can see that there is even this hydrated. So it is ferric hydrated water. Okay, what it is? It is ferric hydrated water. Okay, ferric hydrated water. Yes, Akshay, but you are right. Ferric hydrated water. Yes, Simran, O is O1. I know that O is O1. Oxygen, it is just one quantity of oxygen. Yes, you are absolutely correct. Yeah, so it is hydrated ferric oxide. Hydrated ferric oxide. This oxide, you know, here you can see here they have written here actually I have written oxide, but there is no value in which there is actually written this. So because it is just because hydrated ferric oxide, maybe it is hydrated. Why it is hydrated? Because it is OH plus H2O. And this ferric is Fe3 actually, but they have written as ferric. And this oxide, you can see that there is oxygen right here, right? So that is why it is ferric. Yeah, ferric hydrated water. So it is ferric. This is hydrated and oxide. Okay, or you can say ferric hydrated water. If you just want to learn, अगर आपको इसका formula याद करना है, so you can say it as ferric hydrated water. So this is how a limonite looks like. Let's move to side right. Any problem in limonite? Please tell any problem in limonite. If not, then send those emojis if you don't have any problem. Yes, thank you, Simran. If you don't have any problem, then send
emojis, or if you have, then please ask. Yes, amorphous means in powdered. Actually, it is powdered. Okay, amorphous, actually we are going to study about amorphous. Okay, amorphous is actually powdered. Okay, amorphous, like example of amorphous is floor. Okay, floor is actually powdered now, so that is what amorphous shapes is there. Okay, there are two types of shapes that are found: crystalline. Some solids are crystalline in shapes, and some solids are amorphous in shape. It means that some are actually crystalline shape and some are powdered. Okay, so now let's move to the. Okay, we actually have still some lines left. It is considered one of the series of such oxides. Later, it was thought to be amorphous equivalent of goethite lepodocrite. So what this is actually key. Firstly, it was considered one of series of such oxides because there are actually types of oxide, like different types of oxygen. Okay, just like we have lone tetroxide, um, pubchem, and even ozone, right? Dioxide, right? So the different series of them, and this is considered to be the one of the series of the oxygen. Okay. Later it was thought to be the amorphous, यानी कि powdered equal to, यानी कि बहुत मतलब amorphous equivalent of गोथाइट लेपोडोक्राइट, यानी कि ग्रोथाइट लेपोडोक्राइट जो था वो एक मिनरल है एक्चुअली, दैट इज अ मिनरल and it is equivalent to that mineral. It is powderly equivalent to that mineral. Got it? Yes or no? Now I think that this limonite is now completed. Now let's proceed to the next one. Shall we? Yes, yeah. Okay. So now we have come upon the siderite. Okay, what is siderite? Siderite is a mineral. It is a mineral composed of iron, Fe, carbonate. Okay, this time there is carbonate, means CO3. It means that it has carbon plus what? Carbon plus what? Carbon plus ozone. Okay, and this carbon plus ozone gives us carbonate. Yes, right. So siderite is a mineral composed of iron carbonate, यानी कि iron plus carbonate, iron plus carbon plus ozone, right? So मैं आपसे एक बार yes never fertile, yes Alida. Yeah, so abhi we will actually discuss all the formulas once again, but let's just finish this siderite once. It takes its name from the Greek word oen posadros. Okay, this is a word which is actually a Greek word. It looks like, see, अभी आपको ध्यान से देखना है. It is actually looking like, see, ये आपको थोड़ा थोड़ा ion नहीं लग रहा? Ion, pos, and this is actually sidros. So it means that iron, it is actually an ore of iron, and that is called siderite. It is a valuable iron mineral since it is 48% iron and contain no sulfur, no phosphorus. Okay, it means what? It means these limonite and these all, they might contain these phosphorus, sulfur, but this is a very valuable iron mineral since it is 48% iron, right? So it means that it is 48% iron, मतलब इसके अंदर सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, and the rest 52% iron is actually the rest part that are different elements. Okay, yeah. So now let us just revise all these formulas. So आपको सबसे पहले याद रखना है HMLS, यानी कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट एंड साइडराइट. ठीक है, ये तो हो गया HMLS. Yeah, that is what HMLS means. Now the first type of iron. Yes, Anushka. Okay,
I will ask. चलो, let's just take this as a quiz only. चलो सबसे पहले बताओ कि हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या है. चलो let's start that. Who will answer this question firstly? Hematite का formula. What is the formula of hematite? Yes, guys, please tell what is the actual formula of hematite. Yes, let's see कौन सबसे पहले आंसर करता है. Okay, Garima and Akshay Bhatt has answered ferric, and Akshay Bhatt also meant Fe3, Fe. Anushka, it is Fe3 and then O2 or O2. Okay, O2, or it may be even O3 sometimes, and it is even sometimes O1, because जो oxide की value है, it lies from O1 to O3. Right? Yeah. So the correct answer is Fe2O3. O3 or it, yeah. So it, no. It is Fe3, Anushka, Fe3. It is Fe3, ferric. This one is ferric, and that one is oxide, which means it can be 2, it can be 1, it can be even 3. Okay. So we are saying, we are just asking the formula, which is ferric oxide. आप ऐसे लिखेंगे, ferric oxide. Okay, is it clear? It is ferric oxide. Ferric, and then we have ferric oxide. Yeah, so this one is actually the ozone, ferric oxide, and this one. Okay, so now let us just proceed. Yeah, Nushka, I got it. It is Fe2 only. That was just okay. Yeah, it is Fe2. Yeah, and this one is oxide. Okay. So so the important part is that it may be from the range of O1 to O3, because sometimes the ozone is actually absent and there is actually O2 plus O1. Okay. So that is what the reason. So you just have to learn ferric oxide, yani ki Fe amount 2, and then we have oxide. Let's proceed to the next, and then we have magnetite. इसका तो भाई बड़ा easy है. चलो इसका बताओ. Magnetite का let's just see what is the formula of magnetite. चलो tell what is the formula of magnetite. याद रखना इसका ferric oxide है. तो मैग्नेटाइट में लेट्स जस्ट सी दैट किस का ठीक होता है. मैंने आपको बताया था शायद से पब केम के बारे में. Tetroxide, yes, Garima, remember tetroxide and those pubchem. Yes, what is the formula? It is Fe3 and O4. Yeah, it is Fe3O4, not Fe2, Akshay Bhatt, not Fe2. It is Fe3 and O4. Okay, इसमें क्या था? इसमें था, मैंने आपको बोला ना, that ferric is also sometimes 2 and sometimes 3, because this actually depends upon the mineral and how much elements of things are there. Yes, Fe3 and O4. Yes, very good. Everyone is actually correct. Fe3 and O4. This O4 is called what? अभी गरिमा ने बताया था. O4 is called what? I've told you what is the name of this O4. Yes.
Yeah, tetroxide. Yes, very good. Pubchem, tetroxide. Yeah. So this O4 is tetroxide, or can say pubchem. So this is actually, we will read it as ferrimagneted, or we can say it is this, what it is. It is ferric pubchem. Okay, we will read it as ferric only. Okay, yeah, yes, have you got it? So it is pubchem. Yeah. आप चाहे तो उसको टोटल अगर आप इसे बोलोगे तो आप पबकेम बोलोगे, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ फेरिक प्लस टेट्रा ऑक्साइड विच इज पबकेम. तो Fe3 and O4. Now let's proceed to the next. So इसमें दिस इज एक्चुअली लिटिल ट्रिकी. सो इसका आंसर हम नहीं पूछेंगे, आपने लिखो बस इसका बस इतना आंसर याद रखना है कि इट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रेटेड फेरिक वाटर. आपको याद करने के लिए, जस्ट फॉर यू टू रिमेम्बर इट. आप कैसे याद कर सकते हैं that I've told right now. Yeah, so it is hydrated. This particular part is hydrated. This part is ferric and this part is oxide. So sorry, this part is actually the formula of water. Yeah, and this one is oxide. So let's just see. This one is ferric. This Fe1 is ferric. Okay, this Fe1 is ferric. Then we have oxide. What is this oxide? See, this one is actually hydrated. Yeah, this O, and this one is actually oxide. Okay, so you need to remember. You don't have to remember. आप इतना ही remember कर लीजिए कि hydrated ferric oxide. फिर आप option देके you can understand. Okay, so hematite का क्या, हमने hematite का क्या पढ़ा था? हमने hematite का पढ़ा था ferric oxide. And जो मैग्नेटाइट है उसका हम लोगों ने पढ़ा था what? We have read pubchem. Okay, pubchem याद रखिए बस कि ferric and tetra oxide. Okay, यानी कि हेमेटाइट का क्या था? हेमेटाइट का था फेरिक ऑक्साइड एंड इसका था पबकेम प्लस पबकेम, और यू कैन से फेरिक प्लस टेट्रा ऑक्साइड. एंड इसका थोड़ा बड़ा है, इसका बस आपको याद रखना है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Fe कार्बोनेट यानी कि आयरन कार्बोनेट. ओके, रिमेम्बर्ड? क्या सबको समझ आया? Has everyone got it? क्या सबको समझ आया? Yes. So this one is actually iron carbonate. This one is hydrated ferric oxide. This one is what was this one? This was pubchem, and this one was ferric oxide. So अभी हम लोगों ने side right this all we have done, and now no Alina, it is not that. You cannot actually say like that, but yeah, you may say. अगर आपको ऐसे कहना ठीक है, आप कह सकते हैं. You can say. Okay, that is also fine. आप कह सकते हो. Not HO but OH, because it's actually its order and everything is important. अगर आप water के formula को बोलोगे OH और फिर यहाँ पे 2, तो it is actually wrong. So it is FeO is actually equals to OH, not HO. Okay, you may say it as FeO is actually equals to OH, not HO. Okay, yeah. So now let's proceed to the next, which is manganese. अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मैंगनीज के बारे में. Yes, Akshay Bhatt, right, very correct. So this manganese is a black, hard and iron-like metal. It occurs naturally as manganese oxide. यानी कि what? यानी कि what? It occurs naturally as Me plus O2. Got it? Okay, it occurs naturally. वो naturally अगर करता है, ना कि उसको कोई chemical की जरूरत हो, chemical process की जरूरत नहीं है. It occurs naturally as this. It is well used to make iron and steel. या iron and steel बनाने में help करता है, and it is used to make alloys, chemicals, and even bleaching powder. You know, bleaching powder which is used to bleach the clothes. Have you ever seen
your mothers actually giving the clothes and actually giving the clothes to the bleaching shops where they used to get bleach. Have you ever seen when the colors are actually get bleached? या कलर्स एक्चुअली यू नो दैट जो क्लोथ्स होते हैं हमारे क्लोथ्स के कपड़े चेंज क्लोथ्स के कलर्स चेंज कराने के लिए दे आर एक्चुअली ब्लीच्ड विद द ब्लीचिंग पाउडर आल्सो. ओके या so that is actually the role of manganese is used to make those bleaching powder. Okay Anushka, never matters, but it is there to actually bleach the clothes. You can ask your mothers as well that clothes को bleach करने में it means that को जो clothes है हमारे जो कपड़े हैं उनको actually colors करवाने के लिए this bleaching powder is also used. Okay, it's okay Garima. I have actually seen it. Yeah. Now let's move to the copper. Copper was probably the first metal discovered and used by the early humans. Okay? Yeah. Okay, Anushka. Yeah. Copper was probably the first metal discovered and used by the early humans. So, आपने चारकोल लेते और copper use के बारे में तो I think you might have studied about it. Most welcome. आपने ये हिस्ट्री में पक्का पढ़ा होगा इन 4th और 5th क्लास, राइट? कैलकुलेटिक और कॉपर यूज्ड बाय बिटवीन द न्यूलिथिक एंड द ब्रोंज एज. ओके या सो एंड एंड्स विद द बिगिनिंग ऑफ ब्रोंज एज. इट मींस दैट सबसे पहले चारकोलिथिक आई जाती थी, देन वी हैव सीन द ब्रोंज एज एंड then we have seen the iron age. Okay, it was something like that. Yeah, so the chalcolithic or copper age. Okay, it is a translation between the Neolithic and the Bronze Age. It means सबसे पहले थी मतलब in सब में से. Okay, सबसे पहले none was there. Okay, सब मतलब इनमें से सबसे पहले थी Neolithic age, फिर थी Chalcolithic age, and then थी Bronze age, right? And then iron. Okay, so copper was actually being used for utensils, for actually making those. You know, they used to wear those. I think you might have seen those serials जिसमें वो लोग those कवच पहनते थे. Have you seen them? Those such copper made up of covers and those covers like things, right? As an armor, आपने देखा होगा those copper armors. The rulers at that time used to wear those copper armors, such heavy copper armors for their defense, right? Yes. So that was also made up of copper. Copper was actually very widely used among those people. Okay. So see, the copper is actually very reactive. It can react with many minerals to form different minerals. See, it is actually mixed with tin to make bronze. Okay, it is mixed with tin to make bronze, and it is mixed with zinc to make brass, and it is even mixed with iron and nickel to make stainless steel. Okay, so it is actually mixed with tin to make bronze and zinc to make brass. यानी कि जो bronze age थी, जो copper age के बाद आई, that was actually when early humans have actually mixed actually mixed this tin with copper. So उनको एक अलग metal मिला, that was the bronze age. And then they have started using that particular metal and they have actually led that particular metal to the whole age, means bronze age. Okay, so tin to make bronze, and it is also mixed with zinc to make brass, as well as iron and nickel to make stainless steel. Okay, yeah, that was it. And now we come up to the bauxite. Okay, अभी the most important topic is silver, जिसमें हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे. Okay, about soldering, electroplating, and so on. Okay, yeah. So this bauxite is an important ore which is used to make aluminium. It is an ore means इसमें aluminium सबसे ज़्यादा पाया जाता है. Okay.
And aluminium is used to make utensils, aeroplanes, automobiles, and even electric cables. It has replaced copper in long distance electric transmission. यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में भी कॉपर हेल्प करता है एंड जो एल्यूमिनियम है एल्यूमिनियम ने कॉपर की जगह ले ली है ओके या okay so I think in your home there might be aluminum utensil those steel plates okay steel and aluminum plates okay yeah so and even in automobiles it is widely used okay let's just see that what about this electrical transmission इससे मतलब क्या होता है एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में क्या रोल है okay let's just study that electric power transmission involves the bulk movement of electrical energy जो electrical energy में you have studied about ना coal ना कि why how coal is actually generated कैसे वो air के साथ react होता है and it leads to and it actually produces heat and that heat is actually due to combustion and water वैसे steam में convert करता है and then steam is used to rotate steam turbine and then generator and then electricity है ना वैसे ही this aluminium is also used and इसमें बल्ब इसमें ना actually electrical energy का use होता है from generating site such as a power station or a power plant to an electrical substation where voltage is transformed and distributed to consumers or other stations. So basically क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल पावर है ना वो तो उस तरीके से कोल से जनरेट होता है कोल इज एक्चुअली यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी लेकिन जो एल्यूमिनियम में क्या रोल है कि जो जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना एक पावर स्टेशन से एक्चुअली रिलीज होती है एंड where voltage is actually transformed ठीक है फिर वो इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन पे जाती है यानी कि जो पावर स्टेशन है जो पावर स्टेशन से वो इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन जाती है एंड वहां से वोल्टेज ये वोल्टेज जो है ये एल्यूमिनियम की हेल्प से फॉर्म होता है एंड वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे बिकॉज दिस इज एक्चुअली अगेन अ वेरी लॉन्ग टॉपिक एंड it will actually lead to 30 to 40 minutes 30 minutes I can say 30 minutes or 20 minutes yeah so voltage is actually transform it is where what does it mean that power station पे voltage form होता है with the help of aluminum and वो voltage electrical substation पे जाता है and वहां से वो like consumers होते हैं यानी कि जो बिजली जो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं है ना वहां पे जाता है एंड वहां पे वो सप्लाइड किया जाता है वो वोल्टेज एंड फिर वो इलेक्ट्रिसिटी रन होती है यानी कि अकेले कोल भी कुछ नहीं कर सकता ओके इट रिक्वायर्स मेनी थिंग which we haven't studied till now yeah so that was something where the aluminum is used okay so now yeah so now just 6 minutes left and then we will end the session so let's just study about this gold and then we will end okay abhi actually silver and lots of things are actually left but let's just see we will make another part of it and then we will complete the whole chapter gold is a precious metal it is famous for its lustrous and attractive yellow reddish color सो गोल्ड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है AU यानी कि ऑरम ओके ये इसके ग्रीक वर्ड से लिया गया है इट इज मेनली यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स गोल्ड हैज वेरी लिमिटेड इंडस्ट्रियल इसका मतलब क्या होता है इंडस्ट्रियल यूजेस का इसका व्हाट डज दिस इंडस्ट्रियल यूजेस मीन ये नहीं कि मतलब इंडस्ट्री में यूज नहीं होता इसका ये मतलब नहीं है इसका पता क्या मतलब है Okay, Alina, I will think about it. Okay. वैसे इस ज्योग्राफी में भी हम लोगों ने काफी सारी केमिस्ट्री करी है, right? So gold is very limited in. याद है मैंने आपको उस दिन बताया था कि कमर्शियल यूज के बारे में why minerals are actually mined in only those regions where it occurs as ores. है ना मैंने बताया था ना? किसी को याद है या everyone forgot about it? Thank you, Anushka, and even you teach best.
other subjects like bio. Okay. Yeah. So इसका मतलब क्या होता है industrial uses का? You know, I have taught you on that day about commercial use की why it is mined in only those regions where it occurs as ore. So gold, ये जो gold है, it is actually very, it is actually highly reactive. It is actually a highly reactive metal. Okay. So it is actually not highly reactive because it is least reactive because वो बहुत अलग मेटल्स के साथ काफी कम रिएक्ट करता है. So आपने कभी सुना, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि दिस एल्यूमिनियम, एक्चुअली हमने पढ़ा था कि कॉपर हाईली रिएक्टिव है क्योंकि कॉपर बहुत सारे अलग मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है in order to form another metals, right? हमने पढ़ा था ना, we have studied right now. But gold is a very least reactive metal. Okay, it is one of the least reactive metal. because आपने कभी सुना कि gold किसी और मेटल के साथ combine हुआ in order to form a particular thing? Gold malleable है, it is ductile, but आपने कभी ये सुना है कि gold is actually reacted with another thing? Gold is even not reacted with air. It doesn't get react with air. It is least reactive metal. Okay. गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल एंड इसके बहुत कम इंडस्ट्रियल यूजेस होते हैं. इंडस्ट्रियल यूजेस मीन जैसे हमने उस दिन पढ़े थे ना, तो गोल्ड भी एक्चुअली वहीं पे माइन होता है जहाँ पे ये ओर्स की फॉर्म में अकर करता है. ओके, सो दिस गोल्ड इज एक्चुअली ये कोई वो नहीं है. दिस इज नॉट अ मिनरल एंड दिस इज नॉट इवन ओर. ये तो एक्चुअली गोल्ड प्लेट्स है जो कि शेप देके बनाई गई है. ओके, या so gold has very limited uses means I will continue soon after this exam session as your all exams are starting and even mine. Yeah, so gold has very limited industrial uses means what कि first of all ये वो उसका मतलब ये भी ओर्स की फॉर्म में एक्चुअली ओर्स की फॉर्म में जहाँ पे ये ओर्स की फॉर्म में आता है वहीं पे माइनिंग होती है. एंड दूसरा इट इज लीस्ट रिएक्टिव, सो इसके काफी कम इंडस्ट्रियल यूजेस होते हैं जस्ट बिकॉज इसको रिएक्ट करने की नीड ही नहीं है. इट डजंट गेट रिएक्ट विद एनी अदर मेटल. ओके, any other metal, any other mineral, it doesn't get react easily. ये बहुत least reactive metal है. Okay, that is why it has limited industrial uses. Okay, have you got this one or not? आपको पता चला कि why it has very limited industrial uses? Just because because it is mined in only those regions where it occurs as ores, and secondly कि ये least reactive metal है. Okay, yeah. Okay, Alina, thank you. Okay, Garima. Yeah. So actually time is also up. So I think that we need to stop this session right away because you all might have some other task and even I have. So that is why. Yeah, so only 1 minute is left and I need to make some announcement also. So first of all, I am stop sharing. Yeah. So yes. So what I was saying is that he actually did yeah. 1 second, just 1 second. Yeah, it is 1 minute left. Yeah, I know. Yeah. So what I was saying is that आपको अभी जैसे I will actually post the next part very soon so that हम लोग ये पूरा चैप्टर अच्छे से एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लेना. हमें हर एक सिंगल पार्ट बिल्कुल क्लियरली याद हो जाए. ओके, हमारे माइंड में एकदम से फिट हो जाए. सो उसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करना है एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें जिससे आपको and also press the bell icon so that you can get the notifications of my upcoming videos at the earliest. So take care, bye bye. Thanks for watching.